नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। और आज बैंकिंग अपडेट में बैंक्स प्राइवेटाइजेशन के संबंध में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ द कंट्रीज एपेक्स इकोनॉमिक थिंक टैंक नीति आयोग, बैटेड फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। Once the general election over, Dr. Panagarya, who was talking at the Business Today Banking and Economic Summit, said that once the current dispensation returns to office post the general election, it should be on their agenda. In my opinion, this is in fact a good opportunity when the banks are now in good health. Right now, they are flourishing. They have solid value. This is a good time to privatize. I think this is a good time when the government comes back in its next term, so to start seriously privatizing some of the public sector undertaking banks, he said in the summit. According to Dr. Panagarya, who headed the Niti Aayog earlier for 2.5 years as its first vice chairman, while earlier the PSU banks were in dire straits due to the heightened levels of the non-performing assets, the crisis has been tackled by the government by rescuing them through funding. This has removed the risk of them being undervalued, which could have postponed the decision of selling the government's stake in them. Currently, the public sector undertaking banks are performing well and have healthy asset books, which makes it an ideal time for privatizing them. डॉक्टर पनगड़िया के हिसाब से बैंक्स जो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू है, उनको बेचने का समय आ गया है। हम इनकी विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि बैंक्स प्राइवेटाइजेशन सरकार के लिए सुसाइड की तरह होगा। क्योंकि बैंक्स जो हैं अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिया था, और इस जो अभी तक जो क्वार्टर आए हैं उसमें सारे बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंक के 12 बैंकों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। दे आर द गुड वैल्यूड। बट इसके मतलब नहीं है कि अगर हमको कोई दुधारू गाय है तो उसको मैं बेच दूं। सो वी आर डोंट एग्री विद द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर पनगड़िया। सो इट्स ये फ्यूचर का बात है कि जब नई सरकार आएगी, उसके क्या सोच होगा, क्या करती है, ये अलग की बात है। लेकिन वी अपोज बैंक प्राइवेटाइजेशन। दूसरी खबर सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स मैनेजिंग NPAs better than the private sector. Accordingly to the survey, a large majority, 77% of the respondent banks reported a decrease in the NPA levels at the last 6 months. Public sector banks in India are doing better in comparison to their private sector counterparts in the terms of non-performing assets. A survey conducted by industry body FICCI and the Banking Association, Indian Bank Association found in all respondent public sector banks have cited a reduction in NPA levels, while amongst participating private sector banks, 67% banks have cited a decrease. None of the respondent public sector banks and the foreign banks have stated an increase in their NPA levels over the last 6 months, while 22% private banks reported an increase. Among the sectors that continue to show high level of the NPA, most of the participating bankers identified sectors such as food processing, textile, and the infrastructure. According to the survey, respondent banks were more sanguine about the asset quality prospects. यानी कि जो सर्वे से पता चला कि पब्लिक सेक्टर बैंक अपने बैड एसेट्स क्वालिटी को ठीक करने में ज़्यादा सक्षम है इन कंपेरिजन टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो कीप इट अप द पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि आपकी जब एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपका ग्रोथ होगा। थैंक यू, नमस्कार।